से पेन और पेपर लेके बैठिएगा और उसका आंसर वहाँ पे आप करिएगा। इसके बाद दोस्तों जो मैं आंसर बताऊंगा उसको भी वहाँ पे लिख लीजिएगा ऑप्शन के रूप में, लेकिन आपको कैलकुलेट करके कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। वहीं से मैं आपको बताऊंगा कि अभी आपके प्रोबेबिलिटी हो कि आपकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि आप वहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा और आपको किस स्फीयर में कितनी अभी और मेहनत करने की जरूरत है। तो चलिए दोस्तों आज का संडे स्पेशल यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट इज अ प्रो ड्रग। अब उसके ऑप्शन है एन एक्सिपिएंट विच हेल्प्स इन क्रिएटिंग द एनवायरनमेंट फॉर द ड्रग डिसॉल्विंग, केमिकली ड्रग प्रिकर्सर, एक्सिपिएंट ऑफ ड्रग फॉर्मुलेशन, या फिर अ ड्रग विच इज यूज्ड बाय प्रोफेशनल्स। तो आपको यहाँ पे बताना है कि प्रो ड्रग क्या है और इसका राइट आंसर है केमिकली ड्रग प्रिकर्सर। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बायो प्रिकर्सर या मेटाबॉलिक प्रिकर्सर। अब ऑप्शंस है, द इनर्ट कैरियर इज अटैच्ड थ्रू अ केमिकल बॉन्ड, देयर इज नो इनर्ट कैरियर, देयर इज a change in pH while the formulation, the active drug is converted to its inert form chemically। और इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। मैं थोड़ा सा यहाँ पे तेज चलूंगा दोस्तों क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस हैं। और चलिए क्वेश्चन नंबर 3, एक्शंस ऑफ ग्रोथ हार्मोन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। आपसे एक्सेप्ट पूछा जा रहा है, increased protein synthesis, increased fat utilization, increased carbohydrate, in glucose intolerance। इसका राइट आंसर है increased carbohydrate। क्वेश्चन नंबर 4, several actions of growth hormone are exerted through the elaboration of cyclic AMP, cyclic GMP, somatostatin, insulin like growth factor 1। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1। क्वेश्चन नंबर 5, एक्शंस ऑफ थायरोक्सिन इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो इसका हमेशा ध्यान रखिएगा पेपर में, इंडक्शन ऑफ नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, रिडक्शन इन प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल, फॉल इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल, या फिर राइज इन ब्लड शुगर लेवल। इसका राइट आंसर है फॉल इन प्लाज्मा फ्री फैटी एसिड लेवल। Question number 6, the insulin receptor is a ion channel regulating receptor, tyrosine protein kinase receptor, G protein coupled receptor, या फिर none of the above। इसका राइट आंसर है टायरोसिन प्रोटीन काइनेज रिसेप्टर। Question number 7, hydrocortisone induces the synthesis of the following protein, which in turn inhibits the enzyme phospholipase A2। हीट शॉक प्रोटीन 90, इनहिबिन, ट्रांसकोल्टिन, या फिर लिपोकोल्टिन। इसका राइट आंसर है लिपोकोल्टिन। क्वेश्चन नंबर 8, विच काइंड ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब थ्रू एंडोसाइटोसिस, मॉलिक्यूलर वेट रेंजिंग 100 to 400 Dalton, वाटर soluble ड्रग्स, मॉलिक्यूलर ड्रग्स और ड्रग्स एज ऑयली ड्रॉपलेट्स, या फिर पोलर ड्रग्स। इसका राइट आंसर है मैक्रोमोलिकुलर ड्रग्स और ड्रग्स एज ऑयली ड्रॉपलेट्स। क्वेश्चन नंबर 9, विच ड्रग्स आर एब्जॉर्ब थ्रू पोर ट्रांसपोर्ट, हाई लाइपोफिलिसिटी, वाटर soluble ड्रग्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 Dalton, ऑयली ड्रॉपलेट्स, या फिर एफिनिटी फॉर कैरियर्स। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वाटर soluble ड्रग्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 100 Dalton। क्वेश्चन नंबर 10, which are the two rate determining steps of drug absorption when given orally।
disintegration and deaggregation, disintegration and dissolution, dissolution and permeation through the membrane, या फिर permeation through the membrane and disintegration. इसका राइट आंसर है dissolution and permeation through the membrane. Question number 11. Which form of a drug has greater solubility? Anhydrous, hydrate, crystallized या फिर monohydrate? इसका राइट आंसर है anhydrous. Question number 12. Which one will be the easiest approach to enhance the solubility and dissolution of any drug? Micronize the drug, convert drug into their anhydrous form, convert drug into their hydrous form या फिर convert drug into their salt form. इसका राइट आंसर है convert drug into their salt form. Question number 13. Nitrazepam is a weak base. Will be in which form in the stomach? Ionized form mostly, non-ionized form mostly, half ionized and half no ionized, will form aggregate. इसका राइट आंसर है ionized form mostly. Question number 14. What helps the ionized drug molecules to pass through the cell membrane passively? Different pH, polar group, large lipophilic group या फिर hydration? इसका राइट आंसर है large lipophilic group. Question number 15. Which of the following enzyme acts on the DNA after its entry into the cell? Ligases, endonucleases, deoxyribonucleases या फिर exonucleases? इसका राइट आंसर है deoxyribonucleases. Question number 16. What do you add to myeloma cells to receive HGPRT myeloma cells? It azaguanine या फिर नाइट्रोजन फ्लश, कार्बन डाइऑक्साइड फ्लश? इसका राइट आंसर है इट azaguanine. Question number 17. What do we get when we fuse spleen cells and myeloma cells? Hybridoma cells, red blood cells, killer cells या फिर कैंसर myeloma B cell? राइट आंसर है hybridoma cell. Question number 18. What is the method to harvest monoclonal antibodies from the positive clones? Subculture in the new medium, bioreactors, one a single media plate या फिर टिश्यू कल्चर मेथड? इसका राइट आंसर है टिश्यू कल्चर मेथड. क्वेश्चन नंबर 19. द सेल फ्यूजन हैपेंस बिटवीन स्प्लीन सेल्स एंड रेड ब्लड सेल्स, कैंसर सेल्स, माइलोमा सेल्स या फिर ल्यूकोसाइट्स? इसका राइट आंसर है माइलोमा सेल्स. क्वेश्चन नंबर 20. विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी अ बायोलॉजिकल मेथड फॉर जीन ट्रांसफर? इलेक्ट्रोपोरेशन, माइक्रो इंजेक्शन, पार्टिकल बम्बार्डमेंट या फिर बैक्यूलो वायरल वेक्टर सिस्टम? इसका राइट आंसर है बैक्यूलो वायरल वेक्टर सिस्टम. क्वेश्चन नंबर 21. अलोए बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पॉलीगनेसी, लिलिएसी, यूफोर्बिएसी या फिर नन ऑफ द अबव? इसका राइट आंसर है लिलिएसी. क्वेश्चन नंबर 22. Isfagula belongs to the family of Scrophulariaceae, Euphorbiaceae, Plantageneसी या फिर Polygonaceae? इसका राइट आंसर है Plantagenecy. 23. Isfagula obtained from the dried seeds of Plantago ovata forskel,
रिसिनस कॉम्बिनिस, रियम प्लांट पैल्मेटम या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है प्लेंटेगो ओवेटा फॉस्कर। क्वेश्चन नंबर 24, सेना कंटेन्स सिनोसाइड ए, सिनोसाइड बी, सिनोसाइड सी या फिर ऑल ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 25, डिजिटेलिस ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ केसिया एंगिस्टिफोलिया, डिजिटेलिस परप्यूरिया, टर्मिनेलिया अर्जुना या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है डिजिटेलिस परप्यूरिया। क्वेश्चन नंबर 26, among the following which is used as a cardiotonics, अर्जुना, सेना, रूबार्ब या फिर सिनेमॉन। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अर्जुना। क्वेश्चन नंबर 27, अर्जुना बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ एम्बिलीफेरी, स्क्रोफुलरिसी, कॉम्ब्रिटेसी या फिर लॉरेसी। इसका राइट आंसर है कॉम्ब्रिटेसी। क्वेश्चन नंबर 28, कार्डमोम बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ जिंजिब्रेसी, एम्बिलीफेरी, कॉम्ब्रिटेसी या फिर पिपरेसी। इसका राइट आंसर है जिंजिब्रेसी। क्वेश्चन नंबर 29, among the following which is used as a laxative, कोरिएंडर, फेनल, डिजिटेलिस या फिर इस्फेगुला। इसका राइट आंसर है इस्फेगुला। क्वेश्चन 30, फेनल obtained from the dried fruits of the plant कोरिएंड्रम सैटाइवम, फोनिकुलम वल्गरे, टर्मिनेलिया अर्जुना या फिर नन ऑफ द अबव। इसका राइट आंसर है फोनिकुलम वल्गरे। क्वेश्चन 31, ब्लैक पेपर बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ पिपरेसी, अम्बिलीफेरी, कॉम्ब्रिटेसी या फिर स्क्रोफुलरिसी। इसका राइट आंसर है पिपरेसी। क्वेश्चन 32, among the following which is not a carminative, तो यहाँ पे बताना है कौन कार्मिनेटिव नहीं है, फेनल, एस्फेटिडिया, सेना या फिर सिनेमॉन। इसका राइट आंसर है सेना। क्वेश्चन नंबर 33, तुलसी ऑब्टेन फ्रॉम द ड्राइड लीव्स ऑफ ऑसिमम सैंक्टम, एडहाटोडा वेसिका, कैथरैंथस रोजियस या फिर नन ऑफ द अबव। And the right answer is option A, Osmum sanctum. Question 34, among the following which is used as an antitussive, Vesica, ergot, cinnamon या फिर clove। इसका राइट आंसर है वेसिका। क्वेश्चन 35, आंवला कंटेन्स विटामिन ए, विटामिन सी, बी और डी। इसका राइट आंसर है विटामिन सी। क्वेश्चन 36, फर्स्ट हार्मोन इपिनेफ्रिन वाज सिंथेसाइज्ड इन ईयर 19,003, 19,004, 19,009 या फिर 1889। इसका राइट आंसर है 19,004। क्वेश्चन 37, नेचुरल प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स और सिंथेटिक सब्सटेंसेज विद गुड बाइंडिंग एबिलिटी इन ड्रग डिस्कवरी इज नोन एज हिट, लेड, एनडीए या फिर आईएनडी। इट इज नोन एज हिट। क्वेश्चन 38, फेज 4 ट्रायल इज ऑल्सो नोन बेस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल, मल्टीपल असेंडिंग डोज एरा, पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस या फिर प्री क्लिनिकल ट्रायल। इसका राइट आंसर है पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। क्वेश्चन 39, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय द एंजाइम एडिनिलेट साइक्लेज, कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एएमपी, कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी टू एमपी, कन्वर्जन ऑफ साइक्लिक एएमपी टू एटीपी या फिर कन्वर्जन ऑफ एएमपी टू साइक्लिक एएमपी।
इसका राइट आंसर है कन्वर्जन ऑफ एटीपी टू साइक्लिक एमपी। क्वेश्चन नंबर 40, नेम ऑफ दिस एरोमेटिक रिंग इज डाइफिनाइल मिथाइल इथेन, 2 ethyl 1 methyl naphthalene, 1 ethyl 2 methyl naphthalene, 1 ethyl 1 methyl naphthalene। And the correct option is 1 ethyl 2 methyl naphthalene। Question number 41, how many people will be selected for phase 2 trial? The whole market will be under surveillance, 300 to 3000 people, 20 to 300 people या फिर 20 to 50 people। phase 2 trial, इसका राइट आंसर है 20 to 300 people। Question number 42, biotransformation of drugs is defined as the conversion from one physical form to another। This is true, false, none या फिर both या all। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। Question number 43, the drug biotransformation is a detoxification process। This is true, false, none या फिर all। This statement is true। Question number 44, phase 1 reaction are also known as synthetic reaction। This is true, false, none or all। This statement is true। Question number 45, the phase 1 reactions are detoxification pathway। True, false, none or all। This statement is also true। Question number 46, which of the following statement is the closest description of phase 1 metabolism? Reaction which add a polar molecule to a functional group already present on a drug or one of its metabolites, reactions which occur in the blood supply, reactions which add a polar functional group to a drug या फिर reaction which occur in the gut wall। इसका राइट आंसर है reaction which add a polar functional group to a drug। Question number 47, which of the following statement is the closest description of phase 2 metabolism? Reaction which add a polar molecule to a functional group already present on a drug or one of its metabolites, reaction which occur in the blood supply, reaction which add a polar functional group to a drug या फिर reaction which occur in the gut wall। इसका राइट आंसर है reaction which add a polar molecule to a functional group already present on a drug or one of its metabolites। Question number 48, which of the following is not a characteristic of the moieties that are transferred to the substrate in phase 2 reaction? Simple endogenous molecules are transferred, large molecular size groups are attached, strong polar groups are attached या फिर strong non-polar groups are attached। इसका राइट आंसर है strong non-polar groups are attached। Question 49, which of the following is not a common N containing functional group which undergo reduction reaction? नाइट्रो कंपाउंड, एजो कंपाउंड, एन ऑक्साइड कंपाउंड या फिर नाइट्राइट कंपाउंड। इसका राइट आंसर है नाइट्राइट कंपाउंड। क्वेश्चन 50, विच एंजाइम इज इंपॉर्टेंट इन द फेज 2 रिएक्शन? एस्ट्रेज, एमाइडेजेस, ट्रांसफरेज या फिर एल्डो कीटो रिडक्टेजेस। इसका राइट आंसर है ट्रांसफरेज। क्वेश्चन 51, alkenes and aromatic groups can be metabolized to diols। Which enzymes are involved? Cytochrome P450 enzymes, epoxide hydrolase, both of the above या फिर neither of the above। Right answer is both of the above। Question 52, solubility of a drug in polar solvent and non-polar solvent depends upon chemical structure, particle size, crystal form या फिर all of the above। इसका राइट आंसर है all of the above। Question 53, higher will be the diffusion of the drug across the membrane if higher value of partition coefficient, low value of partition coefficient, higher water soluble या फिर none of above। इसका राइट आंसर है हायर वैल्यू ऑफ पार्टीशन कोएफिशिएंट।
Question number 54. Reaction is most common in drugs having ester or amide functional group. Oxidation reactions, reduction, hydrolysis या फिर phase 1. Right answer है hydrolysis reaction. Question number 55. UDPGA means, the options are, इसका राइट आंसर है यूरिडीन डाइफॉस्फो AD glucuronic acid. Question number 56. Digitalis slows the heart in congestive heart failure by increasing vagal tone, decreasing sympathetic overactivity, direct depression of sinoatrial node या फिर all of the above. इसका राइट आंसर है all of the above. Question number 57. IUPAC name of dobutamine is, and the options are, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए. क्वेश्चन नंबर 58. Hydrolazine is synthesized from 2-formyl benzoic acid and hydrazine, methacrylic acid, 2-azido-ethanol, O-nitrotoluene. And the right answer is 2-formyl benzoic acid and hydrazine. Question 59. Identify high silic diuretic. क्लोरथायाजाइड, फिरोजिमाइड, स्पाइनोलैक्टोन या फिर अमीलोराइड. And the right answer is furosemide. Question number 60. Each carboxylic acid moiety containing captopril, enalapril, fosinopril या फिर bepril. And the right answer is enalapril. Question number 61. The anti-arrhythmic drug which decreases both rate of depolarization phase 0 as well as the rate of repolarization phase 3 of myocardial fibrosis is lignocaine, propranolol, quinidine या फिर verapamil. And the right answer is quinidine. Question number 62. The following drug is used to reduce the frequency of angina pectoris as well as to terminate an acute attack. Isosorbide dinitrate, pentaerythritol tetranitrate, diltiazem या फिर dipyridamole. The right answer is isosorbide dinitrate. Question number 63. Select the organic nitrate which undergo minimal first pass metabolism in the liver. Glyceryl trinitrate, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate या फिर erythritol tetranitrate. And the right answer is isosorbide mononitrate. Question number 64. Nitrate tolerance is least likely to develop with the use of sustained release oral glyceryl trinitrate, sublingual glyceryl trinitrate, transdermal glyceryl trinitrate या फिर oral pentaerythritol tetranitrate. And the right answer is sublingual glyceryl trinitrate. Question number 65. Liposomes are spherical structures usually between diameter 80 nm to 100 nm, 60 nm to 100 nm, 55 nm to 1000 nm, 15 nm to 1000 nm. And the right answer is 15 nm to 1000 nm. Transfersome belongs to the classification according to composition, application, function या फिर none of the above. And the right answer is function. Question number 67. Liposomes with number of lamella are classified as poikilamellar liposomes. Lower, higher, single या फिर none of the above. The right answer is with lower number of lamella. Question number 68. Drawback of lipid hydration method is low internal volume, high encapsulation efficacy, size distribution is homogeneous या फिर none of the above.
And the right answer is option A, low internal volume. Question number 69. The resulting liposomes from French pressure cell extrusion are smaller, equal, larger, or than sonicated SUVs. And the right answer is larger than sonicated SUVs. Question number 70. To produce a microemulsion of small vesicles, at least circulations are required. At least 20 circulation but not greater than 200. 10 circulations, at least 200 circulation but not greater than 2000. At least 2 circulation but not greater than 10. And the right answer is at least 20 circulation but not greater than 200. Question number 71. Solvent vaporization is also known as ether injection, ethanol injection, double emulsification, reverse phase evaporation. And the right answer is ether injection. Question number 72. Pharmacosome belongs to the classification according to composition, function, application, none of the above. The right answer is function. Question number 73. Which of the following is a characteristic of the parental control drug release system by liposomes? Free flowing powders, aqueous solutions, lipid bilayer enclosing the drug, या फिर administration of emulsions. The right answer is lipid bilayer enclosing the drug. Question number 74. The working of fluid energy mill is based on principle of impact, attrition, cutting, both A and B. The right answer is both A and B. Question 75. Size reduction is also known as comminution, polarization, diminution, या फिर all of the above. The right answer is comminution. Question number 76. The bell crank level arrangement is major part of which of the following? Cyclone separator, edge runner mill, end runner mill, या फिर back filter. The right answer is back filter. Question number 77. Fluid energy mill works on the principle of impact and attrition, rotor and stator, compression या फिर attrition. The right answer is impact and attrition. Question number 78. In azeotropic distillation remains low. Heat, volatility, relativity, volatility या फिर none of these. The right answer is relativity, volatility. Question number 79. In the fractionating column of fractional distillation, as you go higher in the column, the temperature becomes lower, temperature becomes higher, minimum absorption occurs, या फिर sublimation risk increases. And the right answer is temperature becomes lower. Question number 80. Which of the following is a characteristic of a horizontal tube evaporator? Agitation is provided only by bubbles leaving the evaporator as vapor. The tube bundle is arranged vertically with the solution inside the tubes condensing outside. To handle viscous solution, a pump is used to force liquid upwards, also called short vertical tube evaporator. And the right answer is agitation is provided only by bubbles leaving the evaporator as vapor. Question 81. Which one of the following rate is observed in mixing of solids? First order law, zero order law, second order law, and the none of the above. And the right answer is first order law. Question 82. Unit of the rate of heart transfer is Joule, Newton, Pascal या फिर watt? And the right answer is watt. Question number 83. Mechanism of mixing in sigma blade mixer, connective, tumbling, shearing या फिर diffusion? And the right answer is shearing. Question number 84. It states that the rate of heat flow through a uniform material is proportional to the area and temperature
and inversely proportional to the length of the path of flow. न्यूटन्स लॉ, हिक्स लॉ, फूरियर्स लॉ या फिर चैटलियर्स लॉ? And the right answer is Fourier's law. Question 85. 1-hexane and 3-methyl pentane are examples of enantiomers, stereoisomers, diastereomers, constitutional isomers. And the right answer is constitutional isomers. Question 86. Cis-trans isomers are diastereomers, enantiomers, geometric isomers या फिर constitutional isomers? And the right answer is geometric isomers. Question 87. 2R4S24 dichloropentane and 2S4R24 dichloropentane are enantiomers, diastereomers, identical conformational isomers. The right answer is identical. Question 88. Which of these is a comparatively insignificant factor affecting the magnitude of specific optional rotation? Concentration of the substance of interest, purity of the sample, temperature of the measurement या फिर length of the sample tube? इसका right answer है temperature of the measurement. Question 89. An alkane which can exhibit optical activity is neopentane, isopentane, 3-methylpentane, 3-methylhexane. और इसका राइट आंसर है 3-methylhexane. Question 90. Enantiomers are molecules that have a mirror image, molecules that have at least one stereogenic center, non-superposable molecules that are mirror images of each other. इसका राइट आंसर है non-superposable molecules that are mirror images of each other. Question 91. Which of the following is not true of enantiomers? They have the same boiling point, melting point, specific rotation या फिर density? And the right answer is specific rotation. Question number 92. Angiotensin 2 causes rise in blood pressure by direct vasoconstriction, releasing adrenaline from adrenal medulla, increasing central sympathetic tone या फिर all of the above? The right answer is all of the above. Question 93. Digitalis slows the heart in congestive heart failure by increasing vagal tone, decreasing sympathetic overactivity, direct depression of sinoatrial node या फिर all of the above? And the right answer is all of the above. Question 94. Losartan is renin release blocker, ACE inhibitor, angiotensin 1 blocker या फिर angiotensin 2 blocker? And the right answer is angiotensin 1 blocker. Hydralazine is synthesized from 2-formyl benzoic acid and hydrazine, methacrylic acid, 2-azidoethanol या फिर O-nitrotoluene? And the right answer is 2-formyl benzoic acid and hydrazine. Question 96. Is carboxylic acid moiety containing captopril, enalapril, phenopril या फिर bepiridil? इसका right answer था enalapril. Question number 97. The anti-arrhythmic drug which decreases both rate of depolarization as well as rate of repolarization myocardial fiber is? ये क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर रिपीट हो गए हैं और इसका जो राइट आंसर था वो था क्विनिडीन. Question number 98. The following drug is used to reduce the frequency of angina pectoris as well as to terminate an acute attack. वो कौन सा होता है? Isosorbide dinitrate, pentaerythritol tetranitrate, diltiazem या फिर dipyridamole? इसका राइट आंसर है isosorbide dinitrate. Question number 99. Select the organic nitrate which undergoes minimal first pass metabolism in the liver. Glyceryl trinitrate, isosorbide dinitrate, isosorbide mononitrate या फिर ethyl tetranitrate?
isosorbide mononitrate. The primary mechanism of beneficial effect of glyceryl trinitrate in classical angina pectoris is increase in total coronary blood flow, redistribution of coronary blood flow, reduction of cardiac preload या फिर reduction of cardiac afterload. इसका राइट आंसर है reduction of cardiac preload. 101 nitrate tolerance is least likely to develop with the use of sustained release oral glyceryl trinitrate, sublingual glyceryl trinitrate, transdermal glyceryl trinitrate या फिर oral penta erythritol tetranitrate. इसका राइट आंसर है sublingual glyceryl trinitrate. Question number 102. The first schedule to the Drugs and Cosmetic Act 1940 prescribes standards for cosmetics, standard for medical devices, authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani Tibb system, standards of the drug to be compiled with by imported drugs. इसका राइट आंसर है authoritative books of Ayurvedic, Siddha and Unani Tibb system. Question number 103. Which of the following is a drug as per the law? Empty gelatin capsule, bandage and insect repellent creams, energy drinks and candy bars, mouth freshening spearmint chewing gums या फिर fish and chicken. तो इसका राइट आंसर साफ दिख रहा है दोस्तों, ये है ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन नंबर 104. Minimum area of the shop to obtain a wholesale license to sell and stock drugs shall be 5 square meter, 10 square meter, 15 square meter या फिर 20 square meter. आपको यहाँ पे मिनिमम एरिया बताना है और वो होता है दोस्तों 15 स्क्वायर मीटर. 105. Who among the following is the chairman of Drug Technical Advisory Board? Drug Controller of India, President of Pharmacy Council of India, President of Medical Council of India या फिर the Director General of Health Services. इसका राइट आंसर है the DG of Health Services. Question number 106. The Narcotic Drugs and Psychotropic Substance Act was passed in the year 1940, 1955, 1985, 2000. तो ईयर भी जरूर याद कर लीजिएगा दोस्तों, हमेशा 1 से 2 क्वेश्चन एग्जामिनेशन में दिख जाते हैं. यहाँ पे इसका राइट आंसर है 1985. Question number 107. Plant of the species of papaver from which opium or any phenanthrene alkaloid can be extracted is called opium poppy, coca, heroin या फिर cannabis sativum. इसका राइट आंसर है opium poppy. Question number 108. Prepared opium is an extract suitable for smoking. Is any medicine containing opium is also called as hemp has undergone the processes to adapt it for medicinal use. इसका राइट आंसर है is an extract suitable for smoking. 109. Who has the power to fix the ceiling price of scheduled formulations? State government, central government, लोक सभा या फिर राज्य सभा. इसका राइट आंसर है सेंट्रल गवर्नमेंट. 110. A non-bonded manufacturer shall be inspected by the officer at least once every month, once every 2 months, once every 6 months या फिर once every year. इसका राइट आंसर है once every month. Question number 111. Which of the following is a psychotropic substance under the Narcotic Drug and Psychotropic Substances Act? Barbital, ampicillin, albendazole या फिर क्लोरोक्वीन. इसका राइट आंसर है बारबिटल. क्वेश्चन नंबर 112. Which of the following is a patent or proprietary Ayurvedic Siddha Unani medicine according to Drug and Cosmetic Act? Parachute coconut oil, अमृतंजन बाम, ओडोमॉस इंसेक्ट रेपेलेंट क्रीम या फिर आर्निसा हेयर ऑयल. इसका राइट आंसर है अमृतांजन बाम. क्वेश्चन नंबर 13. A company wishes to advertise for a new emergency oral contraceptive that it has introduced in the market. Advertisement of oral contraceptive is not allowed as per DMR, OA Act,
Company can seek permission from the government to advertise. Advertisements for oral contraceptives is allowed as per DMR OA Act. The advertisement has to be sent confidentially only to a registered medical practitioner. इसका राइट आंसर है कंपनी कैन सीक परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट टू एडवर्टाइज. क्वेश्चन नंबर 114. कंपल्सरी लाइसेंस इज issued when a drug is novel, forms the first line of treatment for a disorder or disease, is exorbitantly priced, या फिर supply is insufficient. इसका राइट आंसर है is exorbitantly priced. क्वेश्चन नंबर 115. ऑफिसर अंडर FSI, गवर्नमेंट एनालिस्ट, पब्लिक एनालिस्ट, ड्रग कंट्रोलर या फिर नन. इसका राइट आंसर है गवर्नमेंट एनालिस्ट. क्वेश्चन नंबर 116. विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉन पेटेंटेबल? अ न्यू मेडिकल डिवाइस फॉर डायग्नोसिस, admixture of two known substances to give a new effect, algorithms, a genetically modified microorganism. इसका राइट आंसर है algorithms. Question number 117. Schedule K pertains to list of drugs that can be used with caution under medical supervision, list of drugs exempted from certain provisions governing import of drugs, list of drugs exempted from certain provisions governing manufacture and sale of drugs, या फिर list of diseases that a drug cannot claim to cure. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिस्ट ऑफ ड्रग्स exempted from certain provisions governing manufacture and sale of drugs. Question number 118. Oral controlled release the drug only inside the intestine. This is true, false, none or all. इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मीन्स दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट. क्वेश्चन नंबर 19. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कॉन्टिन्यूअस रिलीज सिस्टम? Release the drug along the entire length of GIT, prolong their residence in the GIT and release only at a specific drug, release as soon as comes in contact with the saliva. इसका राइट आंसर है prolong their residence in the GIT and release. Question number 120. What is the characteristic of delayed transit and continuous release system? Release the drug along the entire length of GIT, prolong their residence in the GIT and release only at a specific drug, release as soon as comes in contact with the saliva. यहाँ पे भी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, prolong their residence in the GIT and release. Question number 121. What is the characteristic of delayed release system? Options are same. The delayed release system का सही ऑप्शन है रिलीज ओनली एट अ स्पेसिफिक ड्रग. क्वेश्चन 122. व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स डिसोल्यूशन कंट्रोल रिलीज सिस्टम? Release the drug along the entire length of GIT, prolong their residence in the GIT and release only at a specific drug, या फिर employ waxes to control the rate of dissolution. The right answer है employ waxes to control the rate of dissolution. Question number 123. What is the characteristic of encapsulation or coating dissolution control release system? The options are same like previous. First option is micro encapsulation using slowly dissolving materials. This option is right. 124. What are the characteristics of diffusion control release system? The diffusion control release system, इसका right answer है diffusion of the dissolved drug. Question 125. What are the characteristics of matrix diffusion control release system? इसका right answer है drug disperse in an insoluble matrix of rigid hydrophobic materials. तो दोस्तों ये था का आपका संडे स्पेशल. इस तरह का हमेशा यहाँ पर रैंकर सीरीज आते रहते हैं जिसमें 25 से 30 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाते हैं डिफरेंट सब्जेक्ट से.
ये एक टोटल कंबाइंड पेपर था। इस तरह का ही पेपर आपके जीपैट एग्जामिनेशन में आने वाला है। इस तरह का पेपर हम लोग हमेशा आपको अवेलेबल कराएंगे। सिंपली आपको क्या करना है कि डूअर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, साथ ही साथ टेलीग्राम आईडी में भी जुड़ जाइएगा। आपकी जो भी समस्या है दोस्तों वो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो, मैंने व्हाट्सएप नंबर भी प्रोवाइड कर दिया है और उसका सोल्यूशन आपको जरूर मिल जाएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।